बात अज जो परिवार वालों भाई परमजीत सिंह के परिवार वालों प्रोग्राम करवाए गए हैं उहदे विच समूलीयत करने वास्ते आए हैं तो सारिया जथेबंदियां नूं उन्हां दा इक किस्म का धन्नवाद करने का तरीका ही है भी सारे इत्थे जरूर 2-2 4-4 मिनट अपनी गल कर लैण ते अपने कोल यूरोप तो जिहड़ा वकील है जिन केस लड़िया वो भी पहुंचे हुए हैं तो अमरजीत सिंह भज्जू भाई JP सिंह न्यूयॉर्क तो भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू उन्होंने भी आपने विचार सरवण करने हैं। Can I request Son Simon to come on the stage and say a few words to the congregation? Thank you very much for inviting me here today. Thank you very much also for inviting me to be involved in the campaign to get justice for Paramjeet. I've never been involved with him before. For many of us, involvement in this campaign was very straightforwardly. This was an abuse. It was an abuse of the human rights of a man who lives here in our community with his family in peace for a long time, and whose human rights then, as he went innocently abroad, were taken away from him in a way that is not acceptable. And it was a great honour for me and my team in West Bromwich and in Brussels in the European Parliament to be able to be involved in helping to put this matter right. We did quite a lot of work, although it's one of those things that in a campaign like this there were so many people in so many different countries doing so much work. It's very difficult always to know which of the work actually made the difference. I know that John Speller, who I know spoke earlier, I think, he made a tremendous difference in this campaign. He showed real leadership and really used all his experience and put his considerable weight and gravitas on the line. I do think it appropriate, above all the other politicians who were involved in this, to pay tribute to John Speller's tremendous work in bringing Paramjeet home. But also to the Portuguese contingent, the lawyers and their workers who have come to join with us today. They ultimately pulled the levers and made the difference in Portugal where this happened. So to everyone who is involved, I say congratulations on a tremendous success and on putting right what was a terrible injustice before it became an even more terrible thing. Thank you. जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कुछ थोड़ी गल्लां पंजाबी च करांगा पहले ते फिर थोड़ी जी अंग्रेजी च फर्क करांगा। मैं समझदा ये जिहड़ी गल होई है जिस तरह शोन सामने ने ऑलरेडी किया है कि साडा सीनियर कॉलीग साडा फ्रेंड मेरा मेंटर भी है खुद जॉन स्पेलर, उन्होंने जदों इस गल इशू हुई उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी साड़ी और मेनली उन्होंने कम लेट किया, असा पूरी सपोर्ट की उहदे नाल हो के सारा प्रेशर पाया। साड़ियाँ मीटिंगां हुई फॉरन ऑफिस के नाल हुई, फॉरन हमारे साढ़े जो फॉरन ऑफिस जो मिनिस्टर ने उन्होंने गल्लां हुई तो काफ़ी जरा कोशिश की साने प्रेशर पाने दे इस इशूज़ वास्ते। ये इशू जी सी परमजीत सिंह जी बड़ी नाजुक इशू सी कि इंडिया सरकार ने जो कुछ काम किया वो बहुत ही एक गलत तरीके ने शुरू किया कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एक बंदे ने तुसी इत्थे अगर असाइलम दी है तो ओदी राइट्स जिहड़ी है इत्थे प्रोटेक्ट होनी चाहिए और उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि वो दूसरे तरीके नाल जाके उत्थे उन्होंने वारंट इशू किया। पोर्चुगल जब गए तो ऑलरेडी उन्होंने इस मुल्क की प्रोटेक्शन उन्होंने है तो फिर उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन करने वास्ते कोशिश की तो जदों उसने सारिया मीटिंगां कीतियां फॉरन ऑफिस के नाल जाके तो प्रेशर पाया कि उन्होंने दसन
मैं समझना है कि अगर इंडिया की सरकार जी है वो कोशिश करती है कि असी एज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पेश आइए तो उन्होंने इस तरह बसर करना चाहिए कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होन जिथे तुहानूं पता है ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के जिहड़े इशूज़ हैं वो चाहते कि असी UN की सिक्योरिटी काउंसिल में जाइए असी होर गल्लां करिए तो जदों तुहाडे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक ही नहीं जदों तुसीं बंदियां नूं उन्हां दा हक जिहड़ा है वो देना चाहिए वो तुसीं नहीं दे रहे हो तो किस तरह तुसीं ये डिमांड कर सकते हो। उन्होंने पूरी कोशिश की अंडर हैंड तरीके नाल इस केस विच कि परम सिंह जी उन्हां दी ह्यूमन राइट्स ना टोटल उन्हां दी कोई रिगार्ड नहीं रखिया उन्होंने। सो साडा ये पॉइंट सी कि करन तुहानूं पता है ऑलरेडी जे कुछ हो रहा इंडिया दी उत्थे जेलां जे कुछ हो रहा जिहड़े बंदे उत्थे हंगर स्ट्राइक ते बहन भाई साहब जी जिहड़े हैं उत्थे हंगर स्ट्राइक ते लगे ने बेचारे तो इन्हां दी ह्यूमन राइट्स जिहड़ी है इस गल सिख कम्यूनिटी दे स्पैशली वो कोई रिगार्ड नहीं दे रहे। नेशनल लेवल ते इंटरनेशनल लेवल ते असीं इशू रेज करिए कि जब कोई भी मुल्क अपने आप में कहता कि असीं बड़ी डेमोक्रेसी हाँ असीं सिक्योरिटी काउंसिल दे विच जाना असीं तो उन्हां दे अगर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है वो अपने नेशन के अंदर अपने लोगों को वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर बाहर मुल्कां जिथे कोई बंदे आते हैं तो उन्होंने यूरोपीयन राइट्स के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ उन्होंने अटैक करते हैं तो वो मैं समझना कोई अच्छी गल ही ना उन्होंने वास्ते है तो ना किसी होर वास्ते। सो आई थिंक अगर सरकार जी इंडियन सरकार जी कोशिश करती है कि असी इतने शो करा तो उन्होंने रिस्पैक्ट करना पैना नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जोड़े हैं उस हिसाब न तो करना चाहिए। सो बेसिक मैं फिर आखिर यह कहना चाहना कि जॉन स्पेलर ने तो थोड़ा जो MP है उन्होंने बड़ी कोशिश की असी सारे नाल से उन्होंने कैंपेन लीड किया और मैंने पता सुबह आए मेरी गल हुई सी फोन पर गल हुई जान तो पहलों तो उत्थे आए सन तो उन्होंने काफ़ी कम किया होर जितने भी सारे MP हैं पैट मैकफैडन जो नहीं आ चुकिया आ सकिया सुबह इतने उन्होंने सारे नाल काम किया होर वुलवरहैम्पटन के MPs इतने टॉम वॉटसन ने पूरी कोशिश की पूरी सपोर्टिंग डिप्टी तुहानूं पता डिप्टी लीडर हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की यूरोप में सारा शोन सामे के कनैक्शन से सपोर्ट से ये भी साढ़े पहले मैंबर पार्लियामेंट रहे मिनिस्टर रहे तो इन्होंने उत्थे बड़ी कोशिश की सपोर्ट की। सो इस गल के मैं समझना सारे ही बंदे जोड़े हैं जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जितने भी काउंसलर थोड़े हैं उन्होंने सारे ने इतने काफ़ी कम किया काफ़ी सपोर्ट की। सो मैं सिर्फ आखिर यह कहना कि असी हर एक वेले इकट्ठे हाँ जिथे ह्यूमन राइट्स की इशू है जिथे इंसानियत की इशू है जिथे लोगों के राइट्स जोड़े उत्थे जिन्हें कोई खिलाफ है वो पूरी सपोर्ट करांगे। तो आप सब का शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Welcome to the non-Sikh guests and perhaps those might be the first time you've come to a Gurdwara. I hope it won't be your last time and you'll come back again to a Gurdwara and feel welcome. Guru Nanak Dev Ji, who founded the Sikh religion, the embodiment of God who came on this earth. In 1469 he came on this earth, and Guru Nanak Dev Ji he had a profound different outlook to life compared to the previous religious traditions. Guru Nanak Dev Ji taught that the world is actually a real place, because previous religious traditions believed that the world was a place of suffering and a place which we should escape. Escapism, going into the mountains and becoming ascetics, becoming recluses, living in mountains and escaping society. And also looking forward to, and the objective of life is to be free from this suffering world by looking forward to death and the release from this life in an afterlife. Guru Nanak Dev Ji taught that this world is real, and that the purpose of this world is not to run away from this world, but to live in this world and to serve in this world. Guru Nanak Dev Ji taught us that God doesn't live just in the sky. God is not limited to any temple, to any building, but God lives within the hearts of all people. And this world should be a world which should be free for all and which should be heaven on earth. And how we're going to do that is through people. When people allow the Spirit of God to work through them, they can bring good change. And that's the mission of Sikhs. Sikhs, Guru Nanak Dev Ji gave the Sikhs the mission to bring good into this world, to bring this society, to make it into an ideal society, to rid this society of fear, to rid this society of hatred, to rid this society of oppression and tyranny. And Guru Nanak Dev Ji was one of the first religious leaders of his time
who actually challenged the tyranny, who challenged the oppression of the time. Because religious people tended to just be religious, and religion and politics were two different things. But Guru Nanak Dev Ji taught us that religious people need to get involved in all aspects of life, and that's the only way we can bring positive change, not just for ourselves, but for others as well. Because freedom is not just for ourselves, Guru Nanak taught, but freedom is for all to enjoy. Guru Nanak Dev Ji in 1528, he challenged the first Mughal emperor, Babur, which came in 1528 in a place called Ahmedabad. Guru Nanak Dev Ji challenged him. He didn't see whether this person's got more power. He didn't see he has a bigger army. He didn't see he's got more resources. But the fact was, truth is truth, rights are rights, and civil liberties are for all. And Guru Nanak Dev Ji was one of the first spiritual, social and civil liberties activists of his time, where he stood up to the might of the empire. Guru Nanak Dev Ji, he challenged the emperor and called him a tyrant. As a consequence, Guru Nanak Dev Ji was put into prison. Guru Nanak Dev Ji went into prison. The Mughal emperor realized that he had made a mistake and put this man of God in prison. And he said that he is happy to release him from prison. However, Guru Nanak Dev Ji didn't just leave prison. He asked for the release of all those other prisoners who had been innocently arrested. And this is Guru Nanak Dev Ji's philosophy of being liberated and liberating others. That's why Paramjit Singh is one of many Sikh civil rights activists, social activists. Many have been before him, many are now, and many will be, because this is the philosophy of Guru Nanak. Further on, Guru Arjan Dev Ji, the fifth Sikh Guru, not only was Guru Nanak put in prison, but his successor, the fifth Guru, was even tortured to death for standing up for civil liberties and for social justice and religious freedom. Guru Nanak Dev Ji, Guru Arjan Dev Ji was arrested. He was tortured for a week, and then he was burnt. He was given various horrendous tortures, and he became the first Guru to be martyred for standing up for his beliefs and for freedom. But the struggle for freedom, the struggle for social justice, for liberty for all, for justice for all didn't end there. The Gurus were role models for Sikhs, and that's where Sikhs get the inspiration to this present day from the Gurus. And each Sikh is supposed to be a reflection of the Guru. Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru, in the end of the 17th century, the Hindu priests of Kashmir, the scholars, the academics, the religious leaders, a delegation of 500 or so came, with 30 or so leaders of the Hindu community, seeking for the protection of their human rights, the protection of their actual existence and of their identity. And there, the ninth Guru, he gave them hope, he gave them protection, he gave them shelter, and he gave them a way forward and said that I will make a sacrifice. Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru, presented himself to the authorities and stood up for the human rights and the social liberties of the Hindu community. Guru Tegh Bahadur, as a consequence, along with his three followers, were tortured to death. They could destroy their bodies, but they could not destroy their principles, their spirit, and what they stood up for. As a consequence, the tyranny against the Hindu communities lessened. But it didn't stop there. Next month, we are celebrating Vaisakhi. I would like to end. Vaisakhi marks the point in 1699 where the 10th human Guru, the last human Guru, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, he completed the mission of the Gurus by making the ideal society, by making the familyhood of man, by making a community of such which is dedicated to social justice, which is dedicated to religious freedom and protecting others, truly being an army of God, or being saint warriors, and that is the Khalsa, the sovereign people, the people who do not just be free themselves, but they free others as well. And the Khalsa was those who committed themselves to the Guru. In 1699, those who stepped up to the mark, who stepped forward and said, I'm willing to give my head, I'm willing to give my ego, I'm willing to give myself, not to just live for myself, but to live for the higher cause, to be the army of God.
And this is what the Khalsa represents. It represents a people dedicated to truth and justice. And this legacy carried on even till modern day history, where Sikhs fought for the liberties and social justice of the Europeans as well. The Sikhs lived in India. They were not living in Europe, but they still decided to volunteer and come to Europe and fight for the freedom and liberty of the European nations, because this is the teachings of our gurus, to be free and free others. And we hope that by Paramjit Singh, as he's been freed today, many others in India today, our Sikh brothers and sisters who are still in prisons, which are now Sikh Relief, SOPW, which is their sister branch, is actively trying to help these prisoners, as well as other Sikh organizations and gurdwaras and the Sikh communities across the world. We hope that these also social activists, many of whom actually do not know what their crime is and why they're in prisons, that they can also be returned home as well. And this is not just for Sikhs. We hope that all people of all religions, of all faith, of all creeds, that they have justice and that they have freedom, and that we live in a society which Guru Nanak showed and Guru Nanak spoke about, and he also actually in practical brought into existence during his time, even during the time which the previous speaker mentioned, when the Sikhs ruled northern India, the Punjab. We hope that this ideal becomes a reality, and that we can all live in an existence where we can all live as brothers and sisters in freedom. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sahibe do Alam, Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji de Hazur, जुड़ बैठे खालसा जी, सिंगड़ियों, बच्चों ते मेरे मेहमानों, उस अकाल पुरख का कोटान कोट धन्नवाद है जो सानू इहो जे मौके प्राप्त हुए हैं। असीं मुड़ के सफ़ा इकट्ठे विछा के बैठे हाँ। अज मैं बड़े बड़े पुराने जरनैल इत्थे बैठे वेख रहा, दर्शन कर रहा उन्हां दे। इस तो पहला कि मैं तुहाडे नाल कुछ शब्दां दी पंजाबी सांझ पावां, मैं सिर्फ 1 मिनट लई मुखातब होना चाहना इन्हां मेहमानां नूं। To all my guests and my friends, you listened to my previous speakers. They explained to you about the theopolitical and historical aspect of our life. But in only 3 words, I will explain to you. We have the most simplified way of life: getting up in the morning, taking a good bath, to clean our body, and to mind prayers, make a liveful living, and then to share it with everybody. This is the most simplified philosophy of Sikhism. I hope you enjoy your stay here with us. We did all our best to honor you. If there is any lag in between that time and now, please excuse us. Next time we won't give you a chance. Excuse me. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sat Sri Akal. बार पराए बैसना साई मुझे ना दे। इस फलसफा सानू गुरु साहब ने कई 100 साल पहला दे दिता सी। इलामा इकबाल का एक शेर है, मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। वो कहता है कि तायरे लाहौती उस रिज़्क से मौत छी जिस रिज़्क से प्रवास में कोताही हो। जिस रिज़्क से प्रवास में कोताही आए। सॉरी, मकसद वही है, लफ्ज़ वही है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है। ये ठीक है कि जदों का खालसा पंथ पैदा होया है, खालसा पंथ नूं छड्ड दियां ते मैं गुरु नानक पातशाह तो चला जावां ते सब तो पहला साडा जिहड़ा टकराव शुरू हो गया सी, वो उस दिन शुरू हो गया सी जिस दिन महाराज ने कह दिता कि पांडे तू अपना जनेऊ अपने कोल रख, मैनू नहीं चाहिदा। बस गल उस दिन तो शुरू हो गई सी। उसका विस्तार होंदा गया, हुकूमतां बदलदियां गईयां, रंग बदलते गए, मगर अखीरला रंग जिहड़ा असीं देखिया ये सानू बहुत भैड़ा लगा। हाले कि साडे कंन विच बड़ी पहला ये सरूत पा दिता गया सीगा कि जिस गुलाम नूं तू देख रहा है, गुलाम जिसले बादशाह बनया ये तेनू गुलाम बना के रोल देगा। वो लफज 47 तो शुरू हुए पूरे होने। मैनू आस है तुसीं सारिਆਂ ने साची साखी पढ़ी होगी साकपूर सिंह जी की। साथ साथ बैठे हुए हैं
जदों असीं सफ़र शुरू किया। मैं तुहानूं इस करके जिक्र करना चाहना कि खालसा जी कदी अपने सुते सदे भी ये ना भुलना जो 84 विच साडे नाल कीता है। शायद मैं औरंगजेब की हिस्टरी शायद मैं भुल जावां, हो सकता है किसी ने गलत लिख दी हो सकता है किसी ने मेरी फेवर च ना लिखी होवे, मगर 84 विच मेरी अखां दे सामने जो कुछ इन्होंने किया मैं किस तरह भुल जावांगा। बहुत सारा जिंदगी का हिस्सा तुसीं सारिਆਂ ने इस स्ट्रगल च गुजारिया। ठीक है असीं इन्हां प्रदेशों में आ गए हैं, पर दुश्मन का हाथ बहुत नापाक है, वह बड़ी दूर तक जाता, बड़ी दूर तक पैंदा। पर तुसीं घट तो घट जिम्मेवारी अपनी ना विसारना। तुसीं अपने बच्चों नूं मैं तुहानूं बार बार बेनती करता हुन्ना, मातावां भैणां सारिਆਂ ਨੂੰ कहना हुन्ना कि इहो ਜਿਹੇ मौकों ते अपने गाड़ी बिठाया करो, उन्हां नूं दस दिओ कि साडे नाल दुश्मन ने की किया और भरा बन के किया और अज भी कर रहा। कल की गल है तुहाडे सामने जो करनाल विच सोनीपत होया, वो पंजाबी जिन्हां ने हिंदी विच पंजाबी विच किया कि साडी हिंदी जबान है, टप के वो लीक पार करके जाके बैठ गए हरियाणे विच। जिसले अज उन्होंने घरों में अग लगी और उन्होंने खुद कहा कि काश असीं पंजाब च हुंदे। वो जनानियां रो रो के सीवी ते रो रही सन, कदों कहा सी तुसीं सानूं छड्ड के जाओ, असीं ते तां भी तुहाडे नाल मरदे रहे, तां भी तुहाडी बेपत्ती नूं रोकदे रहे, पर तुसीं साडे नाल उस जुल्म दी वो इंतहा कर दित्ती। 84 भुल गया, उस तो बाद बड़ा कुछ भुल गए, असीं फिर भी विसारदे आए, तुहाडे नाल चलदे आए। तुसीं कल साडे उन्हां बच्चों नूं हत्थ पाउणा शुरू कर दित्ता जिहड़े अपनी जिंदगी गुजार रहे होण ते तुहानूं कुछ नहीं कह रहे असीं। पर अगर तुहानूं इस गल दा मस है, शौक है कि असीं वो क्षमा जला के रखनी है जिहड़ी बाली सी, जिहड़ी स्पिरिट विच साडे विच भरी सी, जे उस क्षमा नूं जला के रखण दा शौक है तो कृपा करके अपने बच्चों नूं अपने गाड़ी बिठाया करो, अपने पोतरे पोतरियां नूं गाड़ी बिठाया करो। जे वो वारस ना रहे तो कल नूं असीं ये गल किहनूं सुना सकांगे, किहनूं दस सकांगे कि साडे नाल की बीतिया। काश मैं बहुत सारे सिंघां नूं जानना जिहड़े निकले हुए हैं, बहुत सारे वो सिंह सिंघणियां हिंदुस्तान की कदी काल कोठड़ी के पिछों लंघे होण ते रात नूं उन्हां नूं चीखां सुनाई दित्तियां होण, सिंघां दे जो हाल उन्होंने कीते सरीए पा के शरीर पाड़ दिते। उदों सिंह खालसा की याद आता है कि राज भाग होना चाहिए। अगर राज भाग तुहाडे कोल नहीं है, लख खुशियां सानूं मिल जाण, असीं दुनिया के किसी रुतबे दे पहुँच जाइए, मगर सिर ते जदों झंडा झुलेगा तो उदों उन्हां दा ही झुलेगा, जिहड़ा दुश्मन दा तुहाडा अपना झंडा नहीं झुलेगा। मेरी एक पुरजोर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है, मैनूं पता है कि वक्त की बड़ी घाट है और मैनूं सारिਆਂ ਦਾ वक्त कट के कुछ दिता गया। आस करना तुहाडे सारिਆਂ कोलों, तुसीं मैनूं पता है भी संगत बड़ी तुहाडे विचों सियाणी है, सूझवान है, इस गल का जरूर ख्याल रखना, इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ भी तहे दिल शुक्रगुजार हाँ कि तुसीं सारे अज इकट्ठे होए हो। चाहता तो मैं सी भी तुहाडे नाल कुछ होर गल्लां भी शेयर करदा, पर आस है कि तुसीं इन्हें प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिमर मना सिमर मना सिमर मना सिमर मना सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम। सो सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, सारिया संस्थावां दा, सारे व्यक्तियों का, गुरु घरां दा, जिन्हां ने किसी रूप दे विच भी इस केस दे विच योगदान पाया। असी समूची कौम वल्लों, भाई परमजीत सिंह दे परिवार वल्लों सारिਆਂ दा धन्नवाद करते हैं। तो जे कोई प्रोग्राम के दौरान कमी कमजोरी रह गई होवे, क्योंकि ये मैं स्पष्ट कर देवां, प्रोग्राम जिद्दां मैनूं ऑर्गेनाइज करके दिता जा रहा सी उहदे मुताबिक होया। तो भाई परमजीत सिंह उन्होंने ने गाइडनेस थले उन्हों के परिवार ने जिस तरह चाहा, तो FSO जिहड़े सिख एक्टिविस्ट हैं उन्होंने दे सदा नाल आ, उन्हों का सहयोग देवेगी, पास्ट विच भी दिता। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। प्रोग्राम के दौरान जे कोई गलत गल कह गई होवे
ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਊਣਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।